पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ये हम सबने बचपन से सुना हुआ है। बट पैसों को हम कैसे बचा सकते हैं, हाउ वी कैन सेव मनी एंड हाउ वी कैन रिड्यूस आवर एक्सपेंसेस, हम अपने एक्सपेंसेस को कम कैसे कर सकते हैं एट एन एनर्जी लेवल यूजिंग होपोनोपोनो, हम आज के वीडियो में वो देखेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। वी आर गोइंग टू हैव वन प्रेयर एट द एंड, also three sections, wherein in second and last section I'm going to tell you specifically about saving money and also managing your expense. Okay, before we start, let me just introduce myself. My name is Beshu. I am a law of attraction coach, a Hooponopono healer, and also a best-selling author for my book A Letter from Money on Amazon. So this video is a must watch for anyone who is worried about money, because I already have experience with one book. I'm writing another one, and my readers have already got results even when I have not written the second book, right? So let's start. First thing you need to understand is that money is also energy. Okay, now when money is energy, what points you need to remember and what you need to do is, अगर पैसा भी एनर्जी है तो वो ये सेंस कर सकता है कि आपको उसके बारे में कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस करते हैं. So it can sense your feelings at an energy level. So you need to write down what are your feelings. You need to be aware about आप पूरे टाइम मनी के बारे में क्या सोचते हैं. अगर आप चिंता करते हैं तो it can sense your चिंता and it will move away from you. ठीक है, so write down all your feelings that you have for money. Then what you need to do is you need to do 21 times Ho'oponopono for all your feelings, मतलब सारी feelings एक साथ, और उनके लिए 21 times Ho'oponopono. This you need to do for at least 21 days minimum, and when you start seeing results you can continue more so that you get more results. Don't stop if you don't get results, just keep doing it, because more the negativity you clean, more the relationship between you and money becomes stronger. Ho'oponopono से हम क्या करें, हम मनी और आपके बीच की नेगेटिविटी को क्लियर करें. एंड बेस्ट थिंग इज, जब आप अगर अपने पर्सनल फीलिंग्स लिख के उसके लिए Ho'oponopono करेंगे तो नेगेटिविटी जल्दी क्लियर होगी. Now, the second section of this very important section of this particular video is आप मनी को सेव करने के लिए Ho'oponopono कैसे करेंगे. So here you need to understand is, first thing, that since money is also energy and we are talking about saving, तो आप पैसे जहां जहां पर भी रख रहे हैं, those places are also energy. So those places need to be clean. What are those places? Like your lockers हो गए, आपके wallets हो गए, आपके like कुछ लोग खाने के डब्बों में पैसे रखते हैं, I don't know, but some people do that. So जहां जहां पर भी आपने पैसे रखे हुए हैं, usually हम ऐसे पूजा के पास में भी रखते हैं, but you need to clean those places with Ho'oponopono. So all you have to do is you have to say I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, to all the places where you are keeping your money. अभी हम लोग बहुत सारे पैसे डिजिटली भी रखने लगे हमारे अकाउंट में. So look at your account, do it, look at your apps, different apps जहां पर पैसे हैं, and say I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. And second thing here you need to do is, whenever you receive money, जब भी आपको पैसे मिले तो respect and feel gratitude for that money. तो आपको वो पैसे की रिस्पेक्ट करना है, स्मॉल मनी भी है तो उसकी रिस्पेक्ट करना है. यू हैव टू फील वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट स्मॉल मनी, बिकॉज व्हेन यू शो रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड टू स्मॉल मनी, यू अट्रैक्ट मोर मनी. सो यू नेवर हैव टू से कि बस मुझे इतने पैसे मिले, बस मुझे इतने पैसे मिले. आपको बहुत खुश होना है, उतना ही रिस्पेक्ट और उतना ही प्यार उस छोटे अमाउंट को देना है जितना आप बड़े अमाउंट को दोगे. ठीक है. एंड last thing, third thing that you need to remember while saving your money is that you need to receive money and do Ho'oponopono for that. तो जब भी आपको कोई पैसे देते हैं तो आपको जैसे वो पैसे मिलते हैं, नोट, सिक्के या डिजिटली आपके अकाउंट में कोई पैसे आते हैं, यू जस्ट हैव टू से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको किस एनर्जी से पैसे दे रहा है, वो कहाँ से होकर आपके पास में आए हैं, यू डोंट नो. सो यू हैव टू clean and appreciate and love that money, so that all the negativity from wherever it is coming just goes off, and you and money can fall in love, whatever you have. Okay, then now here is the third section of this video, which is how to manage your expenses and bring down your expenses. हम आपके expenses को कैसे reduce कर सकते हैं using Ho'oponopono. So for that
अगेन मनी इज एनर्जी, एंड यहाँ पर हमको ये याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप मनी को दे रहे हैं. सो जब आप मनी को दे रहे हैं तो आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हार्श है क्या, बहुत ज़्यादा आप सैड फील करते हैं या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं वेन एवर इट्स टाइम टू पे बिल्स एंड रेगुलर एक्सपेंसेस. सो अगर वो सारे आपके फीलिंग्स हैं, सो नोट व्हाट आर योर फीलिंग्स एंड डू होपोनोपोनो फॉर दैट. ठीक है, कि आपको पैसे देते टाइम कैसा लग रहा है, उसके लिए आपको होपोनोपोनो करना ही पड़ेगा. सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज every time you are giving money, feel that you are blessing somebody and love that feeling of giving. तो जब भी आप पैसे देते हैं तो सोचिए कि आप किसी को bless कर रहे हैं और आप बहुत प्यार से उस पैसे को दीजिए. So feel that and say to your money, I love you, I bless you, I love you, I bless you. And whenever you are giving money, before even giving, just do Ho'oponopono continuously for that money, like I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. And the second point जो मैंने बोला वहाँ पर भी whenever you are saying, so just say go with love, go with love, grow with love, go with love, grow with love. And that the third point, what you need to do is you just have to keep doing Ho'oponopono continuously whenever you are giving money. Now let's move ahead for a prayer, a very quick prayer. I'll tell you how to do it. So before we do it, you have to close your eyes. So close your eyes, take a deep breath. Okay, now relax completely. Think about money as if you are holding it in your hands or whether it is in your account, and now repeat, dear money, I'm really sorry, please forgive me, thank you, I love you. Also take your name. For example, I'll say dear Beshu, you can take your name and then say, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Now you can repeat, I'm sorry for all the negative feelings that I have for money, maybe anxiety, stress, worry, frustration, lack, attachment. I'm now ready to let go of all these feelings, and I also take 100% responsibility for feeling these feelings, and I'm ready to surrender. Okay, I love these feelings and I love my relationship with money. Please forgive me for feeling this attachment, this bond, this compulsion, and I am very grateful for all the money that I have in my life. I'm sorry, worry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, anger. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, this feeling of lack and attachment towards money. Please forgive me for not understanding that money is a blessing which can be shared, which is abundant, and which is coming to me very naturally and flowing in my life very easily. Thank you, money, for always being there with me. I love you for everything that you have given me in my life. I love you, I love you, I love you. Now you can take a deep breath once again. And one last time, just say, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Okay, similar way you can do any random thoughts that comes to your mind about money, and also for all the feelings that you have. And if you loved this video, just type money I love you in the comment section, and I'll be seeing you in the next video. Do hit like button and share it with minimum 3 friends who are in need of this video, and subscribe to this channel if you've not already subscribed, and see you in the next video. Bye bye, take care.